Welcome to AS Levels Computer Science 9618, and we are on our paper 2, chapter number 11, Programming Basics. In this chapter, we have just started, and concept of constant and variables have been explained, and we know that constants are the values which are fixed, and variables are the values which are changeable. In this regard, we have done one program. This is a algorithm, and this is a basic Python program. Okay, now many programming languages contain built-in functions. So in O-level computer, in IGCSE computer, we have done the topic of functions and subroutines. Procedures and functions that are called subroutines. So subroutines are okay? Chapter number 7, O-level, subroutines. In subroutines, we have two types. One is called procedure and other is called functions. Procedure, and function. What are procedures? Do you remember? So, subroutines is going to be divided into two categories. So we are talking about functions, and the functions are already built in your program. So you need to में return होती है value और procedure में देखो return नहीं हाँ ठीक है, रिटर्न होती है और रिटर्न नहीं होती है, मगर दोनों का कॉन्सेप्ट एक ही है. व्हाट इज द कॉन्सेप्ट? द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सबरूटीन इज that you are writing the code. What? You are writing the code, and you are writing the same code statement again and again in the program, and that makes your program bigger. So you use procedure or function to write the code only one time and call the procedure or return the function many times. So you don't need to write down the whole code again and again. Do you understand? जी sir. So we have some functions that's called div, returns an integer part of the division, and mod returns the remainder. So both are returning the value. It means both are functions. So what is div and what is mod? Let me explain you. For example, div 10, 3. So you write div 10, 3. How do we solve it? See this. 10, 3. The 3 is a number which is going to divide 10 by 3. 3 times is equals to 9. 10 minus 9. What is the remainder? 1. So this quotient is called div, the value of div. Simple division, like you done in grade 4 and grade 5. Like 3 divided by 10, 10 divided by 3. So 3 times is equals to 9. You find out the remainder. Remainder is 1. So this quotient is a div value. Is that okay? जी sir. Now what is mod? See this. Mod 10, 3 will return 1. So what is 1 here? 1 is a remainder. This is a return value, and this will be considered as a value of mod. Sir, mod remainder होगा? Exactly. Sir? Yes. Sir, mod remainder होगा? Exactly. Mod is a remainder. अच्छा ठीक है. वैल्यू रिमाइंडर में आएगी, दैट इज योर मॉड वैल्यू. हम इसे सिंपल वर्ड से कह रहे हैं रिटर्न हो रही है. ठीक है, ठीक है. मतलब हम लोग 10 को जो भी div में हमारा जो भी नंबर आएगा हम उसको डिवाइड करेंगे, जो हमारा सेकंड नंबर होगा, और फिर उसका जो हमारा रिमाइंडर आएगा वो मॉड होगा. तो मैं लेता हूं तुम्हारे लिए एक वैल्यू. चलो, फाइंड द वैल्यू ऑफ div. ठीक है, ओके. 49 div कॉमा 6. अब क्या करोगी तुम? 49 and 6. So 6 8s are 48.
What is the remainder? 1. So this is the value of div. 8. 8 is the value of div. जी sir. And what is the value of mod? 1. 1. 1 is a remainder. That's it. Understand? जी sir. चलो आगे बढ़ो. Functions are used for string manipulation. Strings are one of the best way of storing data. So when we are going to use the string data, like your name, address, your age, your telephone number, all of the data is considered as a strings. So when we work on string data, when we wanted to find any div or any mod values, we are going to apply functions. So the comparison of data stored in a string has many uses. For example, checking passwords, usernames, and other memorable data. Now we have an example here. Let's see. Okay, so first we are going to check the password. As I told you, look here, the last line. The comparison of data stored in a string has many uses. Example, checking passwords. Now we have an example related to our password. Let's suppose, Rami, your password is Ramin, R capital, AMEE, and Ramin dot 155. This is your password, right? जी. You have stored this password in your laptop already. So this is a stored password. Now, when you come back to your laptop and you're entering your password, now you're entering your password. So you enter exact same password. So the computer is going to match your password, the strings, and then let you in. Do you understand this logic? जी sir. For this thing, computer used to apply functions. अच्छा, तो सर अब क्या करता है? अब देखते हैं क्या होता है. For example, you are going to store a password as a constant. What do you think? Constant stored password is equals to secret. So this is your password, secret, SECRET, S capital. This is your password. It is a constant, just like Ramin dot 155. जी. Now listen. Declare input password. What is input password? It is a सर पास variable. इनपुट का है. It is a Variable. variable in which you're going to store the strings. What is the string? Secret. You're going to enter secret. Just like Ramin.155 is a password. And every time you log into your laptop, you need to type Ramin.155. Okay. जी. Declare size integer. You have to tell the size of your password. How many characters? Like if they match the specific characters, did you know about Google? Google is going to match the number of characters, and if you enter the password lesser than 8 characters, Google won't accept it. जी sir. Because Google have a verification and validation checks in the password. अब Google ने एक नई शर्त रख दी, I think तुम्हें पता होगा. You must have one capital letter. You must have a one character like @ apostrophe, hash, जी whatever सर. special character, and you cannot नंबर. repeat the consecutive things like 1, 2, 3, 4, 5. You cannot repeat this password. You cannot write जी. ABC Ramin. ABC won't accept. ये गूगल ने नई टर्म्स एंड कंडीशन जिसे हम कहती है वैलिडेशन चेक वो रख दी है. सो सेम साइज है. ठीक है. डिक्लेयर साइज. आगे बढ़ो. आउटपुट. नाउ यू आर गोइंग टू apply a message on the screen, and the message state, please enter your password. Please enter your password. Now you're going to input the password. So input the variable. What is a variable? Input password. Input password is your variable. This is your variable. I just write I password. Okay. Input password. I password. So this is a box. Now you're going to input the password. The password is secret. Secret. Right. Now size is equals to length of input password. In size, the number of characters are going to be count.
How many characters are there? Sir, secret में 6. Yes. Okay. If the size equals to length of stored password, what is your stored password? Secret Already you write it secret. Okay. Is equals to the length of input password, like 6. is equals to 6. Exactly. Now what happened? Let's see. If, okay, then if left input password comma 1 is equals to left stored password comma 1. So t is stored here, t is here. This is right. S is a left, S is a left in both cases. So are they equal? Left and right सर character? बात समझ नहीं है, ये लेफ्ट और राइट कैरेक्टर हमसे दिखा रहा है कि वो और दोनों सेम होने चाहिए. Exactly. देखो तुमने स्टोर्ड सीक्रेट रखा ये हुआ तो पासवर्ड जरूरी तो नहीं है कि हमेशा सेम ही हो. है, क्यों? तुम क्या लैपटॉप पर जब भी पासवर्ड डालती हो वो नया डालती हो? नहीं नहीं सर, मेरा मतलब ये है कि अगर जरूरी तो नहीं है कि 6 हाँ हाँ तो वही ना। कैरेक्टर. देखो my MacBook password is 12345. The computer knows this algorithm. Computer knows that Minhaj Akhtar has stored 12345. अब 12345 was stored in मेरी Mac की उसमें memory में. When I entered 12345, so the length of the character is going to be match first. पहले length of character होंगे. अगर वो 5 हैं तो पहले फिर 1 होगा, फिर एग्जैक्टली फिर वो एक एक कैरेक्टर करके चेक करेगा. एक एक कैरेक्टर करके चेक करेगा. एग्जैक्टली. तो इसमें तो वो सिर्फ लेफ्ट वाला और राइट उन्होंने वाला. इसलिए दिया है. इट्स ओके, इट्स ओके. इनकी एल्गोरिथम थोड़ी डिफरेंट है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. अगर लेफ्ट और राइट सेम है और अगर मिडिल के सेम नहीं है तो एरर देगा. ऑफ कोर्स देखते हैं भी आगे क्या होता है. देखो अब इन्होंने सिर्फ लेफ्ट बताया इनपुट पासवर्ड कॉमा 1. द फर्स्ट पासवर्ड इज एस, whereas on the right input password comma 1 from the right G. They both are equal. Then output password entered has correct first and last. So सिर्फ ये check ही first and last कर रहा है, पूरा password तो check ही नहीं कर रहा. Else output password entered is incorrect. So if somebody instead of writing capital S write T here and S here, like swipe कर दिया उसने mistakenly, तो password incorrect. And if else output password entered is incorrect. And if so this is सर बीच वाले कैरेक्टर भी चेक करवाने तो वो किस तरह करवाएंगे? सॉरी अगर हमने मिडिल वाले कैरेक्टर्स भी तो चेक पूरा 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 तो फिर ये तुम नहीं लगाओगी, हटा दो. अब तुम क्या लगाओगी मैं तुम्हें बता रहा हूँ. जस्ट अ सेकंड, मैं तुम्हें बता रहा हूँ तुम क्या लगाओगी. अच्छा अगर तुम्हें पूरा चेक करवाना है तो भाई ये ले लो कोड. एक हाँ भाई क्या था हमारा इनपुट पासवर्ड इज इक्वल्स टू, हाँ जी, स्टोर्ड पासवर्ड. सही है. जी सर. देन आउटपुट पासवर्ड इज करेक्ट. सिंपल. क्योंकि यू आर टेकिंग द होल इनपुट पासवर्ड. व्हाट इज योर इनपुट पासवर्ड? सीक्रेट. एंड व्हाट इज योर स्टोर्ड पासवर्ड? द सीक्रेट. एल्स आउटपुट पासवर्ड इज एल्स. ठीक. ठीक है एल्स. अच्छा क्वेश्चन था तुम्हारा. एल्स आउटपुट retry. Simple. Retry कर देता हूँ एक बार. That's it. So this is how the computer check the input password. That this is a whole thing. But if you said, sir, I don't want the whole thing. I want to just match my first and the last character. So this is the best approach. ठीक है. Getting it? Now what you have to do, take first. You need to write down mod and div in your own wording, just like I did. Subroutine का एक चार्ट बनाओ छोटा सा इस तरह फ्लो चार्ट, और इसमें ये प्रोसीजर फंक्शन पहले तो लिखो, कॉल और रिटर्न लिखो, फिर div और mod की एक एक एग्जाम्पल लिख लो. ठीक है. ऊपर से पैराग्राफ दो ना, डजंट मैटर. तुम्हें बस कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए और तुम जो कॉपी कर रही हो वो बहुत क्लियर होना चाहिए. ठीक है. राइट. जी you see this is the same thing. Subroutines and library. जो आपको बार बार दोबारा नहीं लिखनी पड़ती. हाँ बस सीधी सी बात है कि सर इंस्टेड ऑफ राइटिंग अ लॉन्ग कोड you are just use a library routine function or procedure. So
The point is, you need to use function or procedure only one time. And calling the code or return the value many times as much as you can. But the point is, let's see, many programming languages include library routines, and it means they are ready to incorporate into a program. Just like a ready-made dresses. You go to the boutique, buy a ready-made dress and wear it. Instead of going to tailor, wait for your dress for a week, and then you're going to wear it. Just like that, we have our ready-made functions or procedures are called library routines. So these routines are fully tested and ready for use. A programming language IDE usually includes a standard library of functions and procedures. So listen, you are using PyCharm. In PyCharm, you have a library routines. In that library routines, you have procedures and functions. So they are being interpreted, or by using a compiler, you can use it. So this is how the library routines work, right? So you already understand it. So I'm not going to make you copy this again. Is that okay? जी sir. Okay. Now, let's discuss in detail how procedures and functions work, how they look like. So I already explained you about a call. Yes, call. Let's see. When writing जी an algorithm, there are often similar tasks to perform that make use of same group of statements. So instead of repeating these statements again and again in the program, programming languages use of procedures. So procedure or subroutine, you can use it. Look, subroutine is used here. The word subroutine. So जी subroutine sir. and library routine, they are same. So when you see any question related to the same word, don't get confused कि सर ने तो ये पढ़ाया ही नहीं, सर ने तो कराया ही नहीं, ऐसा नहीं है. बहुत सारी चीजें हम लोग वर्बली आप लोगों को बोल देते हैं, लेकिन आप लोग उन चीजों को भूल जाते हैं, जो कि ह्यूमन नेचर है, इसमें कोई गलत नहीं, right? So what is procedure? A procedure is defined once and can be called many times in the program. Is that okay? जी sir. What is a syntax? How you use procedure? First, let me clean this mess. Okay. Now, you need to write procedure and a variable name. Of course, you need to use a variable or identifier. Alhamdulillah. Okay. So procedure with a variable or identifier name. And then you're going to use any statement, whatever the statement you're going to use, you need to write here in a middle, and then you need to end the procedure. This is only syntax. Let's see. जी sir. Acha, when you're done with your procedure, you need to call it. How do you call it? You need to call your variable, which you have used up there. You see here, identifier is also called variable. So you use procedure with a variable. You need to call the procedure by using the same variable name. Is that clear? नहीं sir, मैं थोड़ी confused. मैं समझा. थोड़ा सा. देखो, यू यूज अ प्रोसीजर. अच्छा, अभी एग्जाम्पल लोगी ना तो सिंटेक्स समझ में आएगा. अभी तुम बस ये समझ लो, प्रोसीजर विद एनी वेरिएबल नेम, जो भी वेरिएबल तुम यूज कर रही हो, बीच में स्टेटमेंट लिखनी होती है तुम्हें, और फिर उस प्रोसीजर को एंड कर देना होता है. अब तुम्हें जब भी वो प्रोसीजर चाहिए तो तुम क्या यूज करती हो? कॉल. लेकिन कॉल किसको करवा रही हो? ऑफ कोर्स जो ऊपर तुमने वेरिएबल यूज किया है उसको. तो वेरिएबल को यहाँ आइडेंटिफायर कहा गया है. आइडेंटिफायर. अब मैं तुम्हें ठीक. एग्जाम्पल कराऊंगा ना तो तुम्हें अभी क्लियर हो जाएगा. ये सिर्फ सिंटैक्स है, तो सिंटैक्स से हो सकता है तुम्हें समझ नहीं आ रहा हो, लेकिन अभी मैं करवा देता हूँ. चलो शुरू करते हैं. प्रोसीजर. आई वॉन्ट अ वेरिएबल. व्हाट इज द नेम ऑफ माई वेरिएबल? टेल मी. स्टार्स. स्टार्स. Start. यस, स्टार्स माई वेरिएबल. ठीक है. जी. प्रोसीजर, as we know, we need to use a procedure what? With the stars. अच्छा, अब स्टार क्या है? स्टार ऑफ कोर्स एक नंबर है.
अच्छा, ये चीज क्या कहलाती है? ये चीज कहलाती है पैरामीटर। क्या कहलाती है? पैरा। पैरामीटर। यानी पहले तुम्हें आइडेंटिफायर लेना है। आइडेंटिफायर का नाम बताओ। स्टार्स है। और स्टार्स। स्टार के साथ उसका पैरामीटर लेना है, यानी वो किस शक्ल में तुम इनपुट करवाओगी। सो यू कैन इनपुट द स्टार्स इन अ फॉर्म ऑफ नंबर। एंड व्हाट इज द डाटा टाइप यू यूज फॉर नंबर? टेल मी। इंटीजर्स। इंटीजर। अभी बात समझ में आएगी। सो प्रोसीजर, you use a variable name stars स्टार्स। to tell the user that in which form you're going to input stars. So you are about to input stars in a form of a numbers, any number. Okay. Now for counter, counter, what is counter? Counter is a variable. Counter is a variable. अब ये देखना, मैं यहाँ लिख रहा हूँ सी ओ, ये काउंटर है मेरा। सी ओ इज इक्वल्स टू काउंटर है। ओके, फॉर काउंटर 1 to नंबर। अब तुम्हें इनपुट करवाना होगा नंबर। और नंबर किस चीज का पैरामीटर है, मुझे जल्दी से बताओ। लूप का, काउंटर का, नहीं तो स्टार्स का। स्टार्स का। मैंने भी क्या कहा था, तुम्हें स्टार्स किस शक्ल में डालने हैं? नंबर में। तो हमने यहाँ लिया हम्म। काउंट फॉर काउंटर 1 to नंबर। अब तुम नंबर इनपुट करवाओगी। तुमने नंबर इनपुट करवाया, लेट सपोज 5। क्या इनपुट करवाए? 5। तो मुझे बताओ काउंटर कितनी बार चलेगा? 5 टाइम्स। 1 2 3 4 5 टाइम ही 5। काउंटर चलना तुम्हारा शुरू हो गया। अब तुमने उसके साथ आउटपुट लगा दिया स्टैरिक, यानी प्रिंट करवा रही हो स्टैरिक। तो 1 के साथ क्या प्रिंट होगा? एक स्टैरिक। 2 के साथ क्या प्रिंट होगा? स्टैरिक। 3 के साथ क्या प्रिंट होगा? स्टैरिक। 4 के साथ क्या प्रिंट होगा? स्टैरिक। 5 के साथ क्या प्रिंट होगा? स्टैरिक। नेक्स्ट काउंटर, इट मीन्स द लूप्स कीप आइटरेटिंग, बट हाउ मेनी टाइम्स लूप इज आइटरेटिंग? 5 टाइम्स। 5। अब तुम कहती हो सर ऐसा क्यों हुआ? भाई अब तुम बार बार अपने प्रोग्राम में स्टार्स बनाना चाह रही हो, हेडिंग्स वगैरह बनाना चाह रही हो, इसलिए चाह रही स्टार्स हो। अब तुम क्या बार बार स्टार्स के लिए कोड करोगी? तो बस अब तुम सिंपल, जहां पर भी तुम्हें स्टार्स चाहिए वहां पर लिख दोगी कॉल स्टार्स। तो इस तरह से स्टार्स बने हुए आ जाएंगे स्क्रीन। इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस कोड अगेन एंड अगेन, you simply write call stars because a star is an identifier। और उस आइडेंटिफायर के अंदर क्या स्टोर है? नंबर। और नंबर तुमने 5 इनपुट किया। अगर तुम, सर, यस, अगर हमें एक कोड के अंदर डालना है प्रोसीजर, तो हमें पहले से प्रोसीजर अपना कोड करके रखना पड़ेगा, या हम कोड के अंदर ही यू प्रोसीजर नीड में टू कोड? यूज द प्रोसीजर बिफोर। यस, बिकॉज तुमने पहले से ही कंप्यूटर को प्रोसीजर के बारे में बता देना है कि तुम ये चीज बार बार चाहती हो। या तुम अगर कोड के बाद भी करती हो तो फिर तुम्हारी थोड़ी सी प्रोग्रामिंग बढ़ जाएगी। ठीक है। ओके, सो कॉल स्टार्स। When you call your stars, you don't need to write down the code again and again. The 5 stars will be displayed on your screen just like this. ठीक है। This is the beauty of subroutines. Now, take out your notebook. First, you need to write down a structured programming heading and write down the procedure in a proper way with an identifier. Sorry, with a syntax. The syntax is appear here. Yes. एक छोटी सी प्रोसीजर की है, वो लिख लो डेफिनेशन ओन वर्डिंग में, और इसका सिंटेक्स लिखो, फिर मैं तुम्हें आगे बढ़ाऊं। The procedure to print a line with a given number of stars, okay, would be defined as. So if you wanted to output this, like you want not only 1 star, you want many stars. तो इंस्टेड के तुम सिर्फ एक स्टार बनाती इस तरह से, राइट? तुम बहुत सारे स्टार्स अब अपनी, लाइक इफ यू इनपुट 5, सो द 5 stars विल बी देयर। लेकिन इफ यू वांटेड टू इनपुट 50 stars, तो काउंटर पे कितनी बार चलेगा? 50 टाइम्स चलेगा। ठीक है। सो यहाँ पर इन्होंने जो एग्जाम्पल है उसमें 7 टाइम्स लिया था। ठीक है, कॉल स्टार 7। सो 7 टाइम्स स्टार्स विल बी अपीयर ऑन द स्क्रीन बिकॉज 7 टाइम्स हमारा काउंटर चलेगा। ठीक है, ठीक तो है। सिर्फ ये वाला कोड लिख लो, ये काफी है। ठीक है।